नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। हाल ही में ये डिक्लेयर हुआ है केंद्र से भी और गुजरात सरकार से भी परीक्षाओं को लेकर 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी तो है ही कि मास प्रमोशन दिया गया है, लेकिन बारहवीं के विद्यार्थियों के लिए ये कहा गया है कि जुलाई 1 से परीक्षाएं ली जाएगी। मास प्रमोशन देना जरूरी था या नहीं? हम मानते हैं इस बात को कि इस कोरोना के महामारी के समय में घर से बाहर निकलना भी एक तरह का बहुत ही भयानक समय भय समय है रह चुका है, लेकिन परीक्षाएं न लेना क्या ये सच में जरूरी था? आइए हम बात करते हैं सेंट मैरी इंग्लिश मीडियम स्कूल गुड़गांव रामनगर। यहाँ पे जो स्कूल है काफी सालों से स्कूल बेहतरीन काम कर रहा है, सकारात्मक कार्य में भी जुड़ा हुआ है। बात करते हैं हमारे फादर आपको परिचय दे दीजिएगा। Myself, Father Sam Aman, administrator of St. Mary's English High School. Dear beloved, respected Indians, I respect each and everybody. At most, I may thank for the decision of mass promotion. All the children are very lucky. Some are very lucky, but some are very unlucky. I mean, those who are unlucky, those students who are well intelligent. I mean intelligent, who are hard-working students. And there may be students who never read anything. They too passed, as well as the brave students who are studying without day and night, they also passed. Now the matter is that if myself, I am getting only 25% mark, and the student who worked hard is getting 85% mark, and I decide to take science or maths subject, how the decision will be finalized? So here is the matter of concern, how this mass promotion we are looking out. For example, some students never written any exam, FA1, FA2, FA3, FA4, nothing. But the government asked to give the mass promotion. In their report card, which mark we can enter? They have neither occupied themselves for online class, neither giving any fees. So the school is in dilemma whether the students are studying in the same school, but unless and until they applied for LC, we can't debar them. So these lucky students will go to the next class during the academic section. So what I mean that a strict exam should have been taken. Then the matter should be considered, because as per the reports, this COVID will not go tomorrow or day after tomorrow. So what will be the next process? So we have to think. The parents also, some parents may be very happy that my child passed, but some parents are very unlucky to say so. So with humble request, I mean, think about it better, for the better future of the students, for the better citizens of India. Thank you. Father, one more question is there. After this mass promotion, how the students will take the opportunity of science? For example, students who are getting mass promotion, how they will decide that they should take science, they should take commerce, because all are getting passed in a very easy way. So as per your words, you said students who are getting 25%, they can also getting mass promotion. Students who are working very hard.
So now, how this education system will able to judge the students who is capable, a particular student who is capable to take science or commerce or arts? Father, please. During my childhood, the bicycle was the most expensive way of vehicle to go here and there. To get a bicycle was a very great thing. But this generation, they are saying this bike of 85,000, 75,000 or cars. So they think that it is easy to buy a car through a loan or to get harassed with the parents. They quarrel with the parents and parents fail before them, they purchase them. Same is the educational system. They think that science is a very easy subject, maths is a very easy subject. These science students will reach MBBS. They have lot and lot to study, very heavy books. So the children as well as the parents should decide, instead of getting a name board that my child, he or she is taking science, maths. It is very nice to hear he has taken or she has taken science subject, but how they will cope up with that? So I said, think yourself, which is better. If our neighbor is very rich and we are poor, we can't compete with them. थैंक यू। फादर के अनुसार ये कहना इतना ज्यादा अभी मुश्किल समय है। मास प्रमोशन मिलना कुछ विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है, लेकिन उन विद्यार्थियों का क्या जिन्होंने रात दिन एक करके पढ़ाई की है, ये जज करने के लिए कि अगला कदम उनका क्या होगा, तो उन विद्यार्थियों के लिए हम लोग किस प्रकार से अगले साल का वो तय कर पाएंगे कि जिस प्रकार से उन्होंने मेहनत करी है, रात दिन एक किया है, पसीना बहाकर। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिसके पास दो खाना भी वक्त पे नहीं मिलता, लेकिन वो फिर भी टैलेंटेड होते हैं, तो उन बच्चों को किस प्रकार से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा अगर इस प्रकार से अगर परीक्षा लिया जाता स्ट्रिक्टली कंडीशन पे। जिस तरह से टिप्पणी में जरूर करना चाहूंगी ऑन कैमरा, हो सकता है कि अगर राजनीतिक रैलियां मैनुअली हर राज्य में की जा रही है, तो क्या विद्यार्थियों के भविष्य के लिए परीक्षा है नहीं ले सकते थे? सरकार अगर राजनीतिक रैलियां आसानी से हर जगह कोविड के महामारी के समय में भी जब पश्चिम बंगाल में हजारों के नाम पर रैलियां हुई, तो क्या परीक्षाएं विद्यार्थी के भविष्य के लिए क्या परीक्षाएं लेना अनिवार्य नहीं था? ये मेरा सवाल सरकार से है। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज, सीमा भट्टाचार्य, वलसाड़ से कैमरामैन पवन कुमार के साथ। धन्यवाद।